The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base. The 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only active horsed cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is 2 days celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी T90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श शौर्य, विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत नाम दिया गया है। इस 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 फायर होती हैं और 6 भारतीय सेनाओं के उच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्मार्ट सेल पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है 2x2 के नेतृत्व स्पीड गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिव कर रहे हैं। सारथ नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशील इन्फेंट्री कॉम्बैट। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे।
2x2K का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। The ICV BMP going past the saluting the detachment comprising 6 modern vehicles that include reaction force vehicle, heavy and medium, a light vehicle, mortar system, all-terrain vehicle and a special mobility vehicle. Generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent durability. The detachment led by Tufan Singh Chauhan of Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing the first time a perfect opportunity for the Indian Army to share of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system, indigenously designed, developed and manufactured medium-range or free-flight artillery. This rocket weapon system, launcher boasting of 12 rockets, developed radio, Pinaka is a component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon radar system, led by the Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect incoming artillery and rocket fire to determine the origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging Batra mobile bridging system of the have by Captain Singh in India of 9 equipment for bridging over dry area. It can span a minimum of 15 meters in a single and a maximum of 25 meters in multi. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहतर सिस्टम कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रिक वॉरफेयर
आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ ये में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MF area. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR Assam weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the ground forces against a vast array of hostile aerial targets to aircraft, helicopters, subsonic and supersonic cruise. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shakti. So the order now of the sun, and of course the excitement levels are going to build. So we have flowers, colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and to get up early in the morning and arrive here to witness. But definitely well worth it for each and every person who has made it a point and shared with you. Doordarshan's placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests permanently seated side of Thaviapat. Others, of course, right across the private enclosure. And of course, the vibrant villages are also among the special guests, and this program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile, here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां हो, वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात।
गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ता ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हुए। ग्रेनेडियर्स का यह दस्ता, जिसका 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai, resounding at Kartavya Path, the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary, 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1765. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most junior commissioned officers are Rich Chopra, Subedars, and they have brought laurels in games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the band. Regimental Center, 1 Signal Training Center and RT Center Hyderabad. 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Center, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Mishra of the RT Center. Playing the in India. And for the we have an all-women contingent from the Tri-Services led by Captain Sandhya of the Military Police. The team includes Agniveers and regular. Though they underwent rigorous training and practice in their years, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers, military police of Army, Navy, Air Force. As the women proudly march forward, they continue to and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोने सत श्री अकाल। से अच्छा की धुन लेकर एएडी कॉलेज सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ लाल और नायब सूबेदार राबेंद्र सिंह, 72 बैंड वादक इस दस्ते में। रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय तस्वीर करते हुए
रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Past the saluting base, the Bombay Engineer Group of the Bombay, the contingent of Engineer Group and Center Major Divya of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the recipients of the highest gallantry awards, both and independence, and they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Past the saluting base, behind them, the combined band, Maratha Light Center and the Java Center, along with the Reggie Center, comprising 72 musicians led by Ajay Kumar N. Tune through. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar, Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के साथ जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ सेना का ब्रास बैंड। बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता 80 बैंड वाले शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्च कंटिंजेंट 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे, लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रीम और लेफ्टिनेंट देविका एम में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। नारी शक्ति, भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। Contributions made by veterans in front of the saluting base. राष्ट्र निर्माण अब आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and consistent and contributions.
Now the youngest of the armies, the Indian Force. The band led by Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the bars formation. 3 MiG-29 aircraft in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia and Flight Lieutenant Kirti. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau. The gender approach of the Indian Air Force. कर्तव्य पथ पर डी की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी। झांकी में डीआरडीओ में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी प्रणालियों को भी देख भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्भय महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ। भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक भारतीय तटरक्षक मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band, marching smartly past the city, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 140 led by Assistant Commandant Akra.
to the Mahila officers in 2013 and 3 years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the border security force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Lehariya turn with tune of Amar Senani, the CISF's women band, Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF women marching contingent led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going to the shooting base. The motto, protection, security, sunshine, spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा आल्फा की अगुवाई में। देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल हैं। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस गणेश नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, साधारण वीर है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्ण जाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और ये भारत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग ने असिस्टेंट कमांडेंट मोना कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और एक शामिल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस वीर के नाम से जाने जाते अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, Sashastra Seema Bal Band led by Inspector जोश भरा है, हाथ और है पे। That is the Defense Minister, Prime Minister and President watch. This special service that was set up in 1960 aimed to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan border, playing an important role in the Naxal-affected Garh, Jharkhand and Bihar. Sashastra Seema, security and brotherhood. And now warming the
hearts of the people of Delhi, the contingent from the police. The Delhi police first time on the parade, being led by women, bandmaster Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi police song. Just behind the band, the Delhi police marching, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day parade. This time it is an all-women affair. Additional Commissioner of Police Shweta Sugathan leading Mati red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi police song. It is indeed thrilling to know that the police have been participating in Republic Day parade since 1950. And coming now on to the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की आकर्षक सजे धजे बीएसएफ के जवान में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और के रण के इलाके के भरोसेमंद साथी हैं ये जवान आखिर जीवन पर्यंत कर्तव्य बहुत ही आवश्यक ये ऊंट दस्ता जिसकी G20 के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल और धुन बजा रहा है हम हैं सुरक्षा बल बहादुरों का दल। Color we with brilliance, with uniqueness, Rajpat calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. The crisp word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant, led by Senior Punya Purnamma, with a commitment to character and commitment, and adventure. The NCC has nearly 1 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls, Birla Balika Vidyapeeth Milani, the girl is being led by Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, Sare Jacha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tevatia. 140 in perfect harmony, in perfect discipline. Chronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल।
एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमाम। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता, 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम, एमसी स्कूल राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। Decorated jeeps bringing the 19 children given as Prime Minister's Bravery Awards. Children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का खुशहाली उन्नत खेती मनहर फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे तेराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है।
मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरे के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है। विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा प्यार। From the tableau of Madhya Pradesh, we see Odisha, women empowerment in Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness, traditional democratic values present in tribal communities since ancient times in the Bastar state, even after 76 years. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की बड़ी पहचान है। उसके दर्शन छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी, विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था।
And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి ఇది మా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ఆట పాటల అక్షర దోస్తి పలక పలకం పట్టాము ఏబిసిడి ఇంగ్లీష్ మీడియం తెచ్చాము ట్యాబులను చేతిన బట్టి విశ్వవిద్యను నేర్పాము సకల విద్యలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ దేశ ప్రగతికి ఇది సోపానం విశ్వవిద్యయే మా లక్ష్యం జయ హో. The transformation of medium of education theme is the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. Kartila marshals, kartila shams, sharchuk yalmu kartila sharchuk yalmu kartila shams, kartila lama idam chitila shoes, kharuchos kum kartila shoes. और अब सलामी मंच अग्रसर हो तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी में मत पत्र डालकर किए जाने कुदर और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की सीमा पर्यटन वैश्विक आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर और सम्मिलित है। झांकी गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात की विश्व पर्यटन की नन है। From Gujarat, it's time to move on to Himalaya. The tableau opens and transforms into a canvas awash in delicate shades of pink.
diverse themes intricately weaved in cultural get under it. Here comes Jharkhand, transporting us through the rich heritage snow or Vanya silk. The tableau showcases the rise of tribal women in production of tussar silk. विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले। नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభాష్ చంద్ర బోసులు రామ్జీ గొండు కొమరం భీం వీరనారి ఐలమ్మలు యుధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు గడి కొరల గల్లా పట్టి కొంచి కొట్ట చిట్టాలమ్మ జల్ చంకల్ జమీన్ చంకుకి తుడం కొట్ట కొమరం భీమన్న तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत, प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर, अब गगनयान मिशन से रचे नया इसरो विकसित भारत की पहचान, इसरो विकसित भारत की पहचान। The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the Purple Revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. लेवेंडर हर एक खेत में लगाओ, ट्रैक्टर घर घर ले आओ, कम लागत में मुनाफा कमाओ, सारे किसान एक
The all-women CSIR tableau showcases under government's initiatives of scientific developments. और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नए डिजिटल युग में हम साथ हैं, बदल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन पोत परिवहन और मंत्रालय की झांकी, जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली व्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। सागर तट संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों नारी शक्ति ने कदम में फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से पर्यटन का हुआ विकास। सागरमाला And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs, vibrant village through symbolism and various themes, culture, activities, and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, economic viability, and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. धरती एक है, जुड़ेगा छोर छोर, आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर, आशा से विश्व देखता है भारत की। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा, विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन,
स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में नीतियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सद्भाव, समावेशकता, समानता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर उत्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। ऋण संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza. Vande Bharatam, 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classic, and this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Bharatam depicting Nari Shakti, here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify a dance style familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment of the Republic Day Parade
as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system, each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों, समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारत। नमन तुझे, नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी होंगे उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत गुलामी के हर अंश से मुक्ति, करें अपनी दिव्य विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता हम कर्तव्य भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आत्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047
आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक वंदे विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य। The appreciation of the spectators palpable as they give them a long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a expansive canvas of cultural pageantry being displayed. Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, await the grand spectacle. The motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade have obviously been training for a very long time to this year. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have invited guests from various states and union territories dressed in their traditional attire, also seeing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front, on as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और सन पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल, वर्सटैलिटी का करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sen with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree, choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा
कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग योग से सिद्धि शरीर के सामंजस्य। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others. Yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shiv Leela with 9 others. Single-minded concentration, allowing them to perform on those being roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. BSF ये महिला कमान इस समय सलाम सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण पेश करते हुए तेजस्विता शूलोवास फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब जानदार यादगार प्रदर्शन। Precision to the split of a second. All of us watching them surprised by the kind of antics they are performing. Constable Neelam Grave with 2 others. Constable Poonam with 5 others doing the Chandrayaan. Achieving greater heights of CRSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others. Mindfulness shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing at work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feat, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present taking fly past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally flypasts also serve as an aerial salute. They show display aircraft, showcase flying skills and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट आने वाले जितने भी अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past very real for you.
And these are shots taken from Prachand. The first formation in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter, flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation, led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 Helicopter Squadron. Gladiators, being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage with 2 Dorniers, the 41 Squadron in big formation, going past a saluting base. And now, Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force, Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the from 11 Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77 Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को। लेकिन उत्सुकता बरकरार, और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई, स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन S गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे।
You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with... Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle with two Su-30s in Vic formation. The P-8I being flown by Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश। शक्ति का प्रतीक भीम की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर महाले की देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, and the pre-recorded clarity, but today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. Jaguars formation came from Amrit Kal, India's vision for 2047, and the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Norat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons, popular as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारत के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो ऊपर से कुछ ही देर में सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार,
बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा, उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these 30s go past the saluting base, flying at these heights and are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic operation. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, and in which the aircraft pulls out and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again respect for the brilliance of this display by the Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters. We know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity. Always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along his parade back to Raj Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day parade, all the officials standing in line. We now see the presidential carriage moving forward. The 75th Republic Day parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations.
cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere. Presidential carriage moves, and the President, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच। माननीय प्रधानमंत्री गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर यह बग्घी आई थी और आज ये भव्य हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart along with the chief guest for today's parade, President of France. As President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade showcasing India in all its myriad colors, forms and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and leading, knowing, dependable and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से सीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर
कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। राष्ट्रपति जी की बग्गी घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के बाद एक गणमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं। जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। राष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, take leave from the saluting base. Each of the dignitaries will slowly move from this venue. The Honorable Prime Minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, Bharat. The Prime Minister acknowledging of these special invitees, a lot of women who are here specially invited to participate in the Republic Day parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घा प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in the country, the unity as a and that too in a nation that was as diverse as one could be, we saw surely no. Today, we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi, long that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong.
Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that sitting viewers, all of them tuned in to this telecast. That's a future in store for them and for all. कर्तव्य पथ पर काफी बड़ा इलाका है। सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर मंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन कर रहे हैं और समूह बहुत ही है उनको अपने निकट पाकर ये ऐसे क्षण मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर हमारे दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता है। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery is what look traditional ceremonies and protocol. Well, institutions need to be nurtured organically. Celebration is an organic institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy resting on transition of generations of people, of parties in power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen democracy. Is a live example of not only transitions, democracy growing to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। हाँ, दर्शकों का स्वीकार करते हुए अंदाजा लगाइए पूरे कर्तव्य पर 77,000 दर्शक आज यहां मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब, और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको। जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are active in nature too. Celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts. Courage and valor was the lens we used to parade. Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people-to-people relationships, being connected to the people, connecting the people, that is a skill that doesn't change. Today, we are linked to each other, but not so connected. And this walk down Kartavya Path by Prime Minister is building a deep connection. करीब 3 किलोमीटर लंबा है और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर, जिसका शानदार और भव्य समापन और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है। हाँ,
लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। ये राष्ट्रपथ है समृद्ध भारत का, सशक्त का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।